बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाइम न्यूज़ प्रोग्राम व्यूज़ टाइम में अव्हांखे भलीकार चऊं था। आहियां महताब अली नूर। नाज़रीन, फ़लस्तीन जी जेका सूरत हाल आहे, गज़ा ते मुसलसल इसराइल जी बमबारी, मासूम माण्हू जेके मारिजी रहिया आहिनि, उन हवाले सां ख़ुसूसी इजलास जेको आहे उहो तलब कयो वियो आहे। गॾियल अरब इस्लामी गैर मामूली इजलास इनखे नालो ॾिनो वियो आहे। सऊदी अरब जे शहर रियाज़ में इहो इजलास थी रहियो आहे ऐं सऊदी अरब इन अहम इजलास जी मेज़बानी करे पियो। इफ़्तिताही ख़िताब जेको आहे सऊदी अरब जे क्राउन प्रिंस वली अहद सलमान बिन अब्दुल्ला कयो, जंहिंजो चवणो त असां गज़ा ते जंग जेका आहे उनखे रद्द कयूं था ऐं फौरी तौर ते इसराइल गज़ा जो जेको घेरो आहे उहो ख़तमु करे। उनखां पोइ मुख़्तलिफ़ अॻवाननि ख़िताब कयो। OIC जे सेक्रेटरी जनरल बि ख़िताब कयो, इसराइली बर्बरियत जी मज़म्मत कई ऐं फौरी तौर ते गज़ा जो घेराव ख़तमु करण जो मुतालबो बि कयो। मुख़्तलिफ़ सरबराहनि पारां ख़िताब कयो पियो वञे। हिन वक़्तु बि इजलास हलंदड़ आहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ साहब बि हिन इजलास में शरीक आहिनि। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास बि ख़िताब कयो, जंहिं चयो त इसराइल खे इन्हनि जंगी ॾोहनि जो हिसाबु ॾियणो पवंदो। जॾहिं औरतुनि ऐं ॿारनि खे क़तलु कयो वञे त पोइ इनखे जंग नाहे सॼो वेंदो। सलामती काउंसिल गज़ा में जंगबंदीअ में नाकाम थी आहे। अमेरिका सूदो आलमी बिरादरी जंगबंदीअ जे लाइ पंहिंजो किरदारु अदा करे। हिकु त हिन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿियो मामिलो आहे मुल्क जी तारीख़ जेका आहे, ख़ासि तौर ते मुल्क जे क़याम में अमल में अचण खां पोइ लाडले जी जेका इस्तिलाह आहे उहा हिन वक़्तु ज़ोर वठी वई आहे। ऐं हूअं त सियासी पंडित, सियासी तजनिगार चवनि पिया त 1950 खां वठी मुल्क में रुगो लाडला जेके आहिनि उहे ई सिलेक्ट थींदा रहिया आहिनि, पर 2013 खां वठी अवामी लेवल ताईं इहो लफ़्ज़ पहुतो ऐं इमरान ख़ान जे लाइ इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियणु शुरू थियो त इमरान ख़ान सिलेक्टर्स जो लाडलो आहे। पर ताज़ो ई ॾेह वापसि पहुतल नवाज़ शरीफ़ जेको आहे नून लीग जो सरबराह, उन जा जहिड़ी रीति केसिस ख़तमु थिया, जहिड़ी रीति उनखे अदालतुनि जे अंदरि प्रोटोकॉल ॾिनो वियो ऐं उन दरवाज़े मां खेसि एंट्री ॾिनी वई जंहिं दरवाज़े मां कॾहिं बि को जवाबदार दाख़िल नाहे थींदो। उनखां पोइ अल अज़ीज़िया रेफरेंस में खेसि जेका सज़ा मिलियल हुई उहा मुअतल कई वई त पोइ नवाज़ शरीफ़ जे लाइ बि लाडले जी इस्तिलाह या लफ़्ज़ इस्तेमालु थियणु लॻो आहे। अवाम जेको आहे उहो पंहिंजो लाडलो चूंडींदो आहे ऐं सियासी अॻवान जेके आहिनि पंहिंजी कारकर्दगी जी बुनियाद ते अवाम जा लाडला थींदा आहिनि। पर असां वटि इन जो कुझु उबतड़ आहे। अवाम खे इहो इख़्तियार कॾहिं मिली सघंदो या न, इन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेके तजनिगार पैनलिस्ट असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, ओपिनियन मेकर्स, उन्हनि जो तारुफ़ असां करायूं था। नसीर मेमन साहब असांखे जॉइन कयो आहे, सीनियर तजनिगार आहिनि। डॉक्टर जबील अहमद ख़ान साहब असां सां गॾु आहिनि। सलमान आबिद साहब इस्लामाबाद में मौजूदु आहिनि, लाहौर में, उहे असां सां गॾु आहिनि। सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार प्रोफेसर डॉक्टर इनाम भट्टी साहब ऐं डॉक्टर अयूब शेख साहब बि असांखे जॉइन कनि पिया। थैंक यू सो मच, तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। नसीर मेमन साहब, गज़ा जी सूरत हाल ते जेकॾहिं ॻाल्हि ॿोल कयूं, गुज़िरियल ॾींहुं बि पाण ॻाल्हायोसीं, अॼु अहम इजलास हले पियो सर सऊदी अरब जे शहर रियाज़ में। मज़म्मत बि कई वई आहे, जंगबंदी जो मुतालबो बि कयो पियो आहे। इहो मुतालबो को रंग लाहींदो, इसराइल खे झुकाइण में कामयाब थींदा अरब मुल्क जेके गॾु थिया आहिनि सर? ॾिसो, इसराइल हींअर जंहिं पंहिंजे हिकिड़े ज़ुल्म सितम बर्बरियत जी जंहिं इंतिहा ते पहुतल आहे, उन में मूंखे नथो लॻे त हुनखे कंहिं कॉन्फ्रेंसुनि जे ठहराउ ऐं मज़म्मतुनि जी का घणी परवाह रही आहे। अक़वाम मुतहदा जो सरबराह चिटनि लफ़्ज़नि में चई चुको, हुनजो जेको पोप आहे उहो चई चुको, सॼी दुनिया में जेके बाज़मीर यहूदी, क्रिश्चन, हिंदू, मुस्लमान आबादियूं जिते बि आहिनि उहे लखनि जे ॻाणे में ॿाहिरि निकिरी बर्बरियत जी मज़म्मत कनि पिया। यहूदी कम्यूनिटी स्पेशली इन ॻाल्हि खे इन लफ़्ज़नि में चए थी त असांजे नाले ते इंसानियत जो क़त्लेआम वारो ई धंधो बंदि कयो। इन्हनि सभिनी शयुनि जे बावजूदि इसराइल इन सॼे मामले में कंहिं बि क़िस्म जी का चइजे त इंसानियत या अकुल वारी ॻाल्हि करण जे लाइ, ॿुधण जे लाइ तयारु न आहे। ऐं हाणे ॻाल्हि जेका चिटी नज़र थी अचे त उहो अमली तौरु गज़ा ज़म थी वेंदो, जंहिंमें हिकु नंढी आबादी ॾाखिणे तरफ़ वञी रहंदी ऐं उतर वारो हिसो सॼो हू कट ऑफ करे डायरेक्ट इसराइली टेरिटरी वांगुरु उते हू पंहिंजी डिप्लॉयमेंट्स करे छॾींदा। छो त हींअर बि ॾिसो था अमली तौरु लॻे थो त उतर वारो पासो एतिरो हुननि बम हाणे तबाह करे छॾियो आहे जो का वॾी गैर मामूली मज़ामत बि उते कान थी सघी आहे। ऐं इसराइल दावा थो करे त हुननि हमास खे उतां न्यूट्रलाइज़ करे छॾियो आहे। तो उहो त साफ़ नज़र अचे थो त गज़ा जी पटीअ जो वॾो हिसो हाणे फ़लस्तीनी आबादीअ खां आजो थी वेंदो। प्रैक्टिकली हाणे हुनखे हू बफर ज़ोन करे रखनि या जेको बि कनि, पर उहा टेरिटरी इसराइल जी थी ऐं सॼी आबादी हिकिड़े नंढे हिसे में वञी बाढ़जी वेंदी।
होॾां जेको सना जे तरफ़ मिस्र हुननि खे अचणु कोन ॾींदो, हुननि बंदि रखियो आहे हुन इलाइक़े खे, तंहिं करे शायदि इहा ॾखण वारी थोरी पटी हुननि खे सोड़ संगोड़ जी मिले। अॻे ई गज़ा हिकिड़ो तमामु डेंसली पॉपुलेटेड एरिया आहे, जेके गुतियल, जंहिंखे सिंधी में चइबो आहे गुतियल आबादी आहे। हाणे उहो वधीक गुतिजी वेंदो ऐं नॉर्थ तक़रीबन हुननि तबाह करे छॾियो आहे। सो इन ॿियो त थियो, पर हू जेका जंगबंदी त पोइ जी ॻाल्हि आहे। इस्पतालुनि ते हमलनि खां नथा बणनि, एम्बुलेंसुनि ते हमलनि खां नथा बणनि, इस्पतालुनि में फ्यूल ख़तमु आहे, जनरेटर नथा हली सघनि, मरीज़ जेके थोरियूं ज़िंदगियूं बचनि आहे उन्हनि खे बि मरण कंदीअ ते आणे छॾियो आहे। उन्हनि जे लाइ उहे एतिरो स्पेस नथा ॾियनि जुर्गो त इस्पतालुनि खे फ्यूल मिली सघे, माण्हुनि खे पीअण जो पाणी मिली सघे। सो उन बर्बरेज जी हिकिड़ी अहिड़ी इंतहा ते आहे हींअर, ऐं उन जा हुनखे पॉलिटिकल रीज़न्स पंहिंजे मुल्क जे माण्हुनि जा ॾाढो कड़ा हूंदा, उहो अलॻि डिबेट आहे। छो हुन इंतहा ते विया आहिनि ऐं उन ते सब्सक्रिप्शन छो पई थिए हुते, इहो हिकिड़ो अलॻि डिबेट आहे। पर बहरहाल मुख़्तसिर इहो त मूंखे नथो लॻे त हिन कॉन्फ्रेंस जे नतीजे में को इसराइल ते एॾो गैर मामूली दबाव अचे जो उहो चए त न हाणे मुंहिंजे ख़िलाफ़ सभु थी विया आहिनि, मूंखे तव्हां पहुचे हटणु घुरिजे, उहो नथो लॻे। सवाइ हिन जे त हुनजे हिकिड़े डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल इंट्रस्ट खे वॾो सेटबैक थियो आहे, जो मिडल ईस्ट जे अंदरि जेका इसराइल जे लाइ राह हमवार थी पए। ऐं जीअं ॿुधोसीं पिए त हमास जे हिन अगराई खां अॻु में या हुनजो हमले खां अॻु में कुझु ॾींहंनि अंदरि इहो ॿुधण में आयो पिए त सऊदी अरब सां हुनजो बाक़ाइदा डिप्लोमेटिक टाइज़ डिक्लेयर थियण वारियूं, बहालीअ जूं समथिंग को वॾो ऐलान थियण वारो। तंहिंजे करे हिकिड़ी कंस्पेरेसी थियरी इहा बि आहे त उनखे बि अंडरमाइन करण जे लाइ बि इहो टाइमिंग खे हिन तनाज़ुर में ॾिठो पियो। बहरहाल एॾी वॾी जंग में कंस्पेरेसी थियरीज़ त थींदियूं आहिनि, पर मुख़्तसिर इहो आहे त उहो डिप्लोमेटिक सेटबैक हिकु ताईं इसराइल खे ज़रूरु थियो आहे, पर मूंखे नथो लॻे त हुनजी हुनखे ॻणती आहे। छो त अमेरिका ऐं हुनजा इतिहादी यूरोपियन कंट्रीज़ उहे हुननि सां लगातार गॾु बीठा आहिनि, ऐं अॻु बि इसराइल उन्हनि जे बल ते बीठो, कंहिं मुस्लिम मुल्क या अमेरिका पंहिंजो सऊदी अरब या ॿियनि जे बल ते त न बीठो। तो इन करे मूंखे नथो लॻे त हू को हितां को पोइते क़दम खणंदो, रुॻो हिन कॉन्फ्रेंस जे करे, मज़म्मत जे करे, ठहराउ जे करे एॾो वॾो इम्पैक्ट मूंखे थींदे नज़र कोन्हे। बिल्कुलु ठीकु पिया चओ नसीर साहिबु। हिकु पासे इस्लामी मुल्कनि जे सरबराहनि जो इहो अहम इजलास हलंदड़, ऐं ॿिए पासे वरी अल शिफ़ा समेत ॿियूं जेके इस्पतालूं आहिनि गज़ा में, उन्हनि जो इसराइल पारां मुआसिरो, न रुॻो फ़ज़ाई बमबारी, उनखां पोइ वरी टैंक्स बि उते पहुची चुकियूं आहिनि। त इजलास जे दौरान ई अहिड़े क़िस्म जी कार्रवाई त इसराइल पंहिंजो जवाबु ॾेई छॾियो आहे, मतिलबु इन कार्रवाई खां पोइ बि। जी हा, उन मां साफ़ ज़ाहिर आहे इसराइल जो जंहिं अंदाज़ में उहो अगराई करे थो, जंहिं अंदाज़ में हू समूरी इंसानियत जा जेके बुनियादी मयार आहिनि या जेको जंगियुनि जा बि हिकिड़ा कोड ऑफ कंडक्ट आहिनि दुनिया में, उन्हनि सभिनी खां हू बिल्कुलु पुठी ॾेई बीठो आहे हुनखे। तो जेकर हुनखे ॿुधणो हुजे हा, ॾिसो न, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांखे जेकर जेका आलमी बिरादरी आहे, जेकर उन जे कंहिं बि हिसे जी रद अमल जी थोरी बि ॻणती हूंदी आहे त पोइ तव्हां इन क़िस्म जी बरबरियत करण खां अॻु ई सोचींदा आहियो, इन क़िस्म जी इंतहा ते वञण खां अॻु सोचींदा, त उहो हुनखे ॻणती न आहे। हिकिड़ो ॾिसो, तव्हां मुज़म्मत ऐं मुतालबनि ते या इंसानियत जी ॻाल्हि कयो था, त इहो मॉरलिटी जो मामिलो आहे, इहो अख़लाक़ियात जो मामिलो आहे। उन अख़लाक़ियात जी हुनखे का परवाह आहे कान, उहो बिल्कुलु नाबरी वारे वेठो आहे, ऐलानिया चवनि बि था। सो बाक़ी ॿियो हूंदो आहे, ॿियो ख़ौफ़ चवंदा, ॿियो ख़ौफ़ हूंदो आहे त छा इहे एतिरियूं पावरफुल कंट्रीज़ आहिनि जेके मुंहिंजी का नाकाबंदी करे सघनि, मूंखे को अकेलो करे छॾनि, मूं ते के सैंक्शन्स लॻी वञनि, आलमी बिरादरी मुंहिंजो बाइकाट करे छॾे, मुंहिंजो कारोबार बंदि थी वञे, मूंखे कर्ज़ु मिलणु बंदि थी वञे, मुंहिंजा माण्हू ॿाहिरि मज़दूरी करण लाइ, रोज़गार लाइ न वञी सघनि, इहे हुन जूं ज़रूरतूं आहिनि कोन। हुनखे ॿाहिरि को रोज़गार लाइ माण्हू मोकिलणा कोन्हनि। इन्हनि मुल्कनि में त एटलीस्ट हुनजी मजबूरी कान्हे। जंहिंजो हुनखे लाचार हूंदो उहो हूंदो अमेरिका ऐं यूरोप। छो त हुनजो ब्लॉक पहिरें ॾींहं खां वठी हुनजो हामी आहे, उहो हुन सां बीठो आहे। तंहिं करे मूंखे इन जे करे मां चवां थो त मुस्लिम मुल्कनि जी जेके ही तंज़ीमूं आहिनि, OIC वग़ैरह, उन जे मुतालबनि मुज़म्मतुनि या इवन बाइकाटनि जी इसराइल खे घणी ॻणती कान्हे। ठीकु आहे नसीर मेमन साहब, थैंक यू सो मच सर। सलमान आबिद साहब असांखे जॉइन कयो आहे, सीनियर सहाफ़ी तर्जुमा निगार आहिनि। सलमान साहब वेलकम कहते हैं आपको शो में। जनाब सलमान साहब आपका क्या ख्याल है? सर नसीर मेमन साहब को आपने सुना, इट्स टू लेट के अब इस तरह के इजलास बुलाए जाएं, मजम्मत की जाए या मुतालबात किए जाएं इसराइल को जंगबंदी के हवाले से, इसका कोई ख़ास फ़र्क या असर होता नज़र नहीं आ रहा। आपका क्या ख्याल है? जो कुछ होता जा रहा है, जो कुछ हो चुका है,
اور پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے موقف کے حوالے سے؟ دیکھیے پاکستان کا کردار تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس موقع کے اوپر؟ وہ تو خود اپنی ایک کمزور ریاستی نظام کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر سے جب دنیا دیکھتے ہیں تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اور پھر ان کے اوپر جو ایک بڑا ادارہ ہے اقوام متحدہ، جب ان لوگوں نے ایک کمپرومائزڈ قسم کا ایٹیٹیوڈ اپنایا ہوا ہے اور یہ اسرائیل کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کی لاجسٹک سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو آرم سپورٹ کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ جنگ بندی کیسے ممکن ہو سکے گی اور کیسے اسرائیل کو روکا جا سکے گا جب بڑی طاقتوں نے خود یہ سارے معاملات کو سجا کے رکھا ہوا ہے اور اسرائیل کی سرپرستی کی جا رہی ہے؟ تو ایسے موقع پہ اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، OIC بھی کچھ نہیں کر سکتی، عرب لیگ بھی کچھ نہیں کر سکتی. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں نہ صرف بڑی طاقتوں کو جھنجھوڑنا ہے بلکہ یہ جو ہم نے ایک پپٹ قسم کے ادارے بنائے ہوئے ہیں OIC، عرب لیگ اور اسپیشلی اقوام متحدہ، ان کے کریکٹر کے اوپر بھی گفتگو ہونی چاہیے، ان کے رولز کے بارے میں بھی گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا رول اگر صرف مذمتی قراردادوں تک محدود ہے تو اس سے تو دنیا کا جو کمزور طبقہ ہے اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. اور دیکھیے جہاں بڑی طاقتوں کے مفادات ہوتے ہیں وہاں یہ ادارے فوری طور پہ حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جہاں کمزور طبقات ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں وہاں پر پھر آپ کو یہ ادارے اتنے متحرک اور فعال نظر نہیں آتے، صرف مذمتی قرارداد تک محدود ہوتے ہیں. تو اس لیے جو آج دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ بڑی طاقتوں سمیت اس اقوام متحدہ کے ادارے کے اوپر آتی ہے جو جنگ بندی روکنے میں ناکام رہا ہے، اور نہ اس نے کسی قسم کی کوئی افرمیٹو ایکشن لیا ہے جس کی بنیاد پہ کوئی جنگ بندی ہو سکے. تو میں تو اس کو دیکھتا ہوں جو مسلم حکمران ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر جو ہے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، اور پاکستان سمیت جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کی یہ پوزیشن بھی نہیں ہے کہ وہ بڑی طاقتوں کو اس طرح سے دنیا کی پالیٹکس میں چیلنج کر سکیں. وہ بھی ایک مذمتی قرارداد تک ہی محدود رہتے ہیں اور کہیں اپنے شہروں کے اندر کوئی جلسے جلوس ہو رہے ہو تو ان کی پروٹیکشن کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا دنیا کے اندر حکمران طبقہ ایک طرف کھڑا ہے، دنیا میں مسلمان حکمران طبقہ ایک طرف کھڑا ہے، لیکن دنیا کی عوام جو ہے وہ جنگ بندی کے خلاف کافی متحرک ہے. خاص طور پہ ہم نے یورپ وغیرہ میں دیکھے ہیں جہاں انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر ڈیمانسٹریٹ کیا ہے اور ریزسٹ کیا ہے کہ جناب یہ جنگ بندی کی جائے، جنگی ماحول ختم کیا جائے. اور دیکھیے جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں نا، جب آپ بچوں پہ، عورتوں پہ، بزرگوں کے اوپر، عبادت گاہوں کے اوپر حملے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے اپنا اصول بنا لیا، طاقت کی حکمرانی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سر. جی تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے نا بڑی طاقتوں کے لیے، اور بڑی طاقتوں نے جس قسم کی بربریت کو پروٹیکٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے، آپ نے شروع میں کہا کہ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے، وہ خود کمزور ریاستی نظام کا شکار ہے. تو سلمان عابد صاحب، کمزور ریاستی نظام میں لاڈلے کی اصطلاح اس وقت زور پکڑ دی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان 2013 کے بعد سے لاڈلے کے طور پر مشہور ہوئے، اور جس طرح میاں صاحب کی واپسی ہوئی، کیسز ختم ہوئے اور سزائیں معطل ہوتی جا رہی ہیں، اب ان کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے لاڈلے کی. ہمارے ملک میں سیاستدانوں میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ کیا وہ عوام کے لاڈلے بن سکیں کارکردگی کے بنیاد پر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے پاس کبھی اختیار آئے گا اپنا لاڈلا چننے کا؟ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی جماعتیں کم اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں زیادہ ہیں اور خاندانی ملکیتی کمپنیاں ہیں. میں ان کو سیاسی جماعتوں کے طور پہ اگر دیکھوں تو ان کے کافی داخلی مسائل نظر آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لاڈلا کی اصطلاح جو آپ نے کہی کہ 2018 میں یا عمران خان کے حوالے سے شروع ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کہتی رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کی مجموعی سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے لاڈلے رہے ہیں وہ تو شریف خاندان رہے ہیں، اور ان کی 80s سے لے کر آج تک کی سیاست کو دیکھیں تو کسی نہ کسی شکل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیرو رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کو لاتی بھی رہی ہے. بے نظیر بھٹو کے خلاف تو انہوں نے کئی دہائیوں تک نواز شریف کا لاڈلا پن نہ صرف برداشت کیا بلکہ اس لاڈلے پن کو پیدا بھی کیا. اسلامی جمہوری اتحاد بنایا تمام جماعتوں کا، اور بے نظیر بھٹو کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف ان کو ایک واک اوور ملا تھا.
اس کے بعد پھر آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کئی دفعہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے, وزیر اعلیٰ بنے, ان کے بھائی وزیر اعظم بنے, وزیر اعلیٰ بنے. یہ سب اسی لاڈلے پن کا کھیل کا حصہ تھا. پھر تیسری قوت کے طور پہ جب عمران خان آئے تو عمران خان کا بھی ایک سینیریو جو ہمیں نظر آتا ہے 2013 کے بعد, ان کو بھی ریئلائزیشن ہوئی کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی درکار ہے. اور اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو ٹارگٹ کیا تو ان کو ایک متبادل ہیرو چاہیے تھا, لاڈلا چاہیے تھا, وہ عمران خان بھی بنے. عمران خان زیادہ دیر تک ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکے اور 3 سالہ اقتدار یا 3.5 سالہ اقتدار کے بعد وہ بھی ایک بوجھ بن گئے. تو پھر ایک متبادل کے لیے پھر ایک سہارے کی ضرورت پڑی, تو پھر نواز شریف صاحب کی ٹائی نکلی. تو نواز شریف صاحب تو بڑے خوش قسمت آدمی ہیں, بڑے اچھے لاڈلے ہیں, تو ان کو باہر بھی نکالا جاتا ہے, پھر لایا بھی جاتا ہے, پھر ان کے لیے دوبارہ دربار سے جایا جاتا ہے, پھر ان کے لیے اسٹیج سجتا ہے, پھر وزارت عظمیٰ سجتی ہے, یا ان کے خاندان کے لیے نظام کمزور ہے. پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا تصور بہت کمزور ہے. یہاں جب حکومتیں جو ہیں وہ ووٹوں کے سے تھوڑی بنتی ہیں, یہاں تو الیکشن سے پہلے الیکشن ارینجمنٹ طے ہوتے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر حکومت سازی ہوتی ہے. اور ابھی بھی دیکھیے جب 2024 کا الیکشن ہونا ہے تو الیکشن سے پہلے ہی لوگوں نے نتائج اعلان کرنا شروع کر دیا, اور نواز شریف کو متفقہ وزیر اعظم بھی بنا دیا ہے, اور ان کو پروٹوکول بھی اسی طریقے سے دیا جا رہا ہے. اسی پر پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں, اسی پر پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں, اسی پر باقی جماعتیں بھی بول رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ لاڈلا پن جو ہے اس وقت تک چلے گا جب حق حکمرانی جو ہے وہ عوام کے پاس واپس نہیں آئے گی. وہ یہ خواب شاید ہی کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکے. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. جی بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب. تھینک یو سو مچ سر. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اما کے ویلکم چوں پیا بدھو پیا سر اما. ڈاکٹر صاحب اسلامی ملکن جو سربراہی اجلاس ہلندڑ ہے ریاض میں, گڈل عرب اسلامی غیر معمولی اجلاس ان کے سڏ پہ, سعودی عرب میزبانی کرے پو. خطاب تو ڈاढा زبردست کیا پیا آहिनि, مذمت بھی کئی وئی, مطالبو کयो वियो जंग बंदी जो. पर सम्झो पिया अरब मुल्क जेके अॼु इन इजलास जे मामले में हिकु प्लेटफॉर्म ते गॾु थिया आहिनि, को प्रेशर डेवलप करे सघंदा इसराइल ते, इसराइल खे झुकाइण में कामयाब ईंदा? न पहिरियां कहिड़ा प्रेशर हिन डेवलप कया आहिनि. ठीकु आहे, हिकिड़ी सही हिकिड़ी कोशिशि आहे, इन कोशिशि खे सराहिजेसि, दुआ बि कजेसि त इहे बिल्कुलु सुठा मज़म्मती बयान बि ॾियनि, दुआ बि कजेसि त जेके हिन जी जॉइंट स्टेटमेंट ईंदी उन में मज़म्मत बि कयो वेंदो, कंडेम बि कयो वेंदो, वार क्राइम जो बि शायदि ज़िक्र करे छॾनि. असांजी प्राइम मिनिस्टर हिमत कई आहे, उन हिमत करे चयो आहे त बाबा ही बिल्कुलु शर्मिंदगी ताईं हथ ताईं सॼी दुनिया ख़ामोश आहे, शर्मनाक ॻाल्हि आहे इहा. असांजी प्राइम मिनिस्टर चई चुको आहे. असांजो प्राइम मिनिस्टर वरी सभिनीनि खां कदम अॻिते खणी उन चई छॾियो आहे त ही तमामु ख़तरनाक बम्बार्डमेंट बि थिए थी पई, जेका थिए थी. सही थो चवे बिल्कुलु, कंडमनेशन बि उन कई आहे. पर छा अमेरिका ऐं उन जा हवारी इन्हनि ॻाल्हियुनि खे पसंदि कंदा आहिनि? इहा ई ॻाल्हि हुते हुकुमरान जेके आहिनि इन जा गल्फ कंट्री जा या ॿिया जेके 57 कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि जे हुकुमराननि जो बि इहो ई हाल आहे. त ॿ ॻाल्हियूं हुन मां निकितियूं. इन खां पहिरियां बि त एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन अंडर आर्टिकल 9 ऑफ दी OIC चार्टर उन में थियो आहे न. पहिरियां बि थियो 2019 में जेॾी महिल तल अवीव खां दारुल ख़िलाफ़ो शिफ्ट करे इज़राइल ऐं अमेरिका यरूशलम में जेको डिस्प्यूटेड टेरिटरी जेको अक़वाम मुतहिदा जी रेज़ोल्यूशन जे बंदि करणी पई थिए, उन वक़्तु बि त इहो इजलास थियो. उन में जेके ख़तरनाक क़िस्म जा ऐं उन में तमामु वज़न वारा जेके स्टेटमेंट आया हुआ उहे बि त असांखे ज़हन में रहणु खपनि. उन्हनि स्टेटमेंट्स जो छा थियो, उन जेके जॉइंट स्टेटमेंट हुई, कुझु पॉइंट्स उन जॉइंट स्टेटमेंट जा मां तव्हांजे साम्हूं रखी थो छॾियां. हीउ इजलास थियो हो 31 में 2019 में, ऐं उन में इन्हनि चयो हो त असां जेको चार्टर आहे OIC जो उन जी पासदारी कंदासूं, उन्हनि जे उसूलनि जी पासदारी कंदासूं, ऐं ॿियो त असां इस्लाम ऐं मुस्लिम जेका स्पिरिट आहे जेन्युइन सॉलिडेरिटी जी यानी ॿधीअ जी, उहो बि असां कंदासूं. पोइ उन में ॿिए उन में पैराग्राफ में लिखनि था पिया त असां मरकज़ियत जेका आहे न फ़लस्तीनियन काज़ जी उन्हनि खे बरक़रार रखंदासूं, ऐं अल-कुद्स अल-शर्फ खे असां मेक श्योर कंदासूं त फ़लस्तीनियन जो कैपिटल हुजे, माना उन दारुल ख़िलाफ़ो हुजे, ऐं उन फ़लस्तीनियन जो पंहिंजो हिकिड़ो मुल्क हुजे. इहो तमामु बहितरीनु इन्हनि जॉइंट स्टेटमेंट कढी 2019 में,
ऐं उन खां बाद उन्हनि चयो त बाबा इज़राइल कब्ज़ो थो करे, जेको भंजकणी आहे 2334 सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन जी, उन जी उन्हनि पैराग्राफ हिकिड़ो सॼो अलाए 8 9 पैराग्राफ आहे, उन्हनि में उन इहो ॿुधायो हो, ॼाणायो हो दुनिया खे, ऐं पोइ उन्हनि ॼाणायो हो त बाबा ही कब्ज़ो थी करे इज़राइल, इहो बि इन्हनि खे छॾणु खपे कब्ज़ो। ऐं पोइ उन्हनि ॿियो बि हिकिड़ो सिक्योरिटी काउंसिल जो रेज़ोल्यूशन 242 खे साइट करे पंहिंजी स्टेटमेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जी 19 में 2019 में उन्हनि चयो त बाबा गोलान हाइट बि ख़ाली कयो तव्हां, बहितर गोलान हाइट खे अमेरिका बि तस्लीम करे वरितो त गोलान हाइट आहे इलाइक़ो इज़राइल जो। हाणे हिन जो मतिलबु छा थियो, मां इहो मिसाइल जाणे ॾियणु थो चाहियां। असां ते दुआ गो आहियूं, दुआ सां जेके ॿिया चवनि था पिया दुआ सां जेके दवा करे थी सघे न OIC प्लेटफॉर्म तां, उहो भी कानूनी तौर ते करे थी सघे। सरबराहान तमामु मज़बूत सरबराहान आहिनि, 2 बिलियन 2 खरब मुस्लिम ममालिक जा सरबराह आहिनि। उन खां अलावा दुनिया में मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां आवाज़ थी उथे, उन में यहूदी बि आवाज़ था उथारनि ह्यूमन राइट जी वायोलेशन जी, ऐं उन में ॿियनि मुल्कनि मां बि आवाज़ थी उथे। उन में OIC खे खपे त ज़ाहिर आहे को थोरी मज़बूती पेरनि ते बीहनि, छो जी आवाज़ त मिलियन मार्च थिए पियो इराक ते जेॾी महिल चढ़ाई कई नेटो फोर्सिस ऐं अमेरिका, उन वक़्तु बि उन्हनि उन ॻाल्हि खे न ॿुधी। इन जो मतिलबु इहो थियो त इन वक़्तु बि कंडमनेशन वग़ैरह थींदी, जे वाक़ई में इन दफ़े असां उमेद रखी था सघूं, हालांकि घटि आहे उमेद, त हू सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन जी जेका आहे उन मुताबिक़ उन जी भंजकणी थी आहे त डिप्लोमेटिक बाइकॉट कनि, इकोनॉमिक बाइकॉट कनि, सैंक्शन लॻाइनि जेको कानून में ॾिनल आहे इंटरनेशनल कानून में, इज़राइल ते मल्टीलैटरल सैंक्शन, माना 57 मुल्क जेके आहिनि चवनि असां तव्हांजी का शइ न वठंदासीं ऐं तेल बि तव्हांखे असां सप्लाई न कंदासीं। ही त हिमत आहे न, मां सम्झां त इहो करे था सघनि। ऐं पोइ एतिरी हिमत आहे त पोइ सिक्योरिटी काउंसिल में उन्हनि खे रेज़ोल्यूशन मोकिलनि, सिक्योरिटी काउंसिल इन जनरल असेंबली में बीहर इन ते इजलास करे सिक्योरिटी काउंसिल जा पंहिंजा रेज़ोल्यूशन उन्हनि खे सिक्योरिटी अक़वाम मुतहदा जो चार्टर जो आर्टिकल 41 जे तहत पाबंदी लॻाए सिक्योरिटी काउंसिल इज़राइल ते। ये ख़्वाब त सुठा आहिनि, ख़्वाहिश त सुठी आहे, पर छा ही थी सघंदो, मूंखे संभाव उमेद घटि आहे। अलाह करे थी वञे त बसि मिठाइयूं वराईंदासीं सुभाणे इंशाअल्लाह। जी ठीक है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, थैंक यू सो मच सर। नसीर मेमन साहब, लाडले के हवाले से अवां जो छा ख्याल है सर? अॼुकल्ह इहो लफ़्ज़ कुछ घणो इस्तेमाल पियो थिए, या त लीडर हुजे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जहिड़ो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जहिड़ी, जेको लाडलो ऐं लाडली पंहिंजे कारकर्दगी जे बुनियाद ते थिए, पर मौजूदा लीडर्स में छा इहा अहलियत नाहे त उहे अवाम जा लाडला थी सघनि, या इहो इख्तियार उन्हनि ताक़तवर धुरियुनि वटि छो आहे त उहे लाडलनि खे सिलेक्ट कनि सर? इहो त सियासी धुरियुनि जी पंहिंजी ख़्वाहिश जे करे थियो आहे, या उन्हनि जी चॉइस आहे त उहो अवाम जो लाडलो थियण बजाए कंहिं वॾे दर जो लाडलो थियणु चाहिनि था। ॾिसनि था अवाम जे लाडले थियण में सख़्तियूं बि आहिनि, जेल बि आहिनि, कॾहिं वारो मिले थो कॾहिं नथो मिले। बेनज़ीर थियण जे लाइ पोइ जान ॾियणी थी पए, भुट्टो थियण लाइ फाई खाइणी थी पए। हेॾा मौज मज़ा आहिनि, जेकर सॼो हिसो न मिले भला ज़रो पुर्ज़ो बि मिलियो वञे, माण्हू सॼो लाडलो न थिए, अधु लाडलो थिए, मुनो लाडलो थिए, पोणो लाडलो थिए, चोथाड़ लाडलो थिए त बि दुनिया जी आख़िरत ॿई ठही थी वञे माण्हुनि जी। तंहिंजे करे हुनखे ज़रूरत नथी महसूसु थिए थो एस्टेब्लिशमेंट सां वॾे टकराव जे चकर में पवनि। अवाम जो लाडलो थियण लाइ जेके तक़ाज़ाऊं आहिनि न, उहे असल में ॾाढियूं सब्र आज़माइनि। उहे घुरनि थियूं शफ़ाफ़ हुक्मरानी, उहे घुरनि थियूं हक़दारनि खे हक़ ॾियणु। उहे अवाम जो लाडलो थियण जी तक़ाज़ा आहे त तव्हां माण्हुनि जी तरक़ी ऐं माण्हुनि जे ईंदड़ नसुलनि जी भलाई लाइ कमु कयो, माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि जे बहितरीन लाइ कमु कयो। करप्शन ऐं चोर बाज़ारी ऐं अकरबा परवरी जे बजाए ईमानदारी, इंसाफ़ ऐं मेरिट खे अॻभरो कयो। हाणे इहे त ॾाढा ॾुखिया कम आहिनि, हू कमु सवलो आहे, फ़ोन थिए हाज़िर साईं, कहिड़े दर ते हाज़िर थियणो आहे, जेको हुकुम तव्हां चओ, हू चवनि हीउ बिल पास कयो, तव्हां चओ साईं हीउ त थी वियो, ॿिया बि ॿुधायो जेके तव्हांजा अञा तयारु न हुजनि त उहे बि असां करे छॾियो, इहो कमु सवलो आहे। सो इहे जेके सवला कम आहिनि न, उहे चूंडे वरिता आहिनि असांजी सियासी धुरियुनि बदकिस्मती सां। पोइ असां सभु ऐं पाण वेठा हुए रसियल वारो न मिलियो, पोइ चवंदासीं घोड़ाड़ी एस्टेब्लिशमेंट ज़ुल्म कयो, जमहूरियत खे तबाह करे छॾी। येस, एस्टेब्लिशमेंट करे थी, हिन में शक न आहे, मां एस्टेब्लिशमेंट खे आजो नथो कयां, पर एस्टेब्लिशमेंट खे कुल्हा अछे केरु थो? कॾहिं हिकु भेरो सब्र जो रोज़ो रखी ॾिसो,
हिकु भेरो ॿ भेरा न मिले हुकूमत, बेनज़ीर खे बि त हर 1.5 सालनि में कढी छॾींदा बिल्कुलु, पर पोइ किथे न किथे उहा एतिरो अवाम जी वापसि किथे वेंदी, अवाम वटि वेंदी, सदाईं बेनज़ीर जॾहिं लहंदी वरी फौरन अवामी राब्ता मां पोइ 2 सालनि खां पोइ जॾहिं हुननि खे पंहिंजो लादिलो न वणंदो त पोइ हुनजी मजबूरी हूंदी, थोरो हुन ते बि न कंदा, हिननि जी मजबूरी हूंदी त हाणे हुन सां ॻाल्हायूं त मुल्क जे हिन हालतुनि में मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु आहे त जंहिं वक़्तु इमरान ख़ान जी हुकूमत तमामु कमज़ोर हालत में ई इमरान ख़ान लाॾिले वारो दर्जो विञाए चुको हो, अखियुनि जो ठार न रहियो हो ऐं उहो बि पंहिंजनि ग़लतियुनि जे करे न रहियो। मां नथो चवां इमरान ख़ान को वॾो उसूली मौक़िफ़ रखियो, वॾो जमहूरियत पसंदि अवाम दोस्त थी पियो तंहिंजे करे लाॾिलो पिणु विञाई, ईअं कोन हो। हुन लाॾिलो थी इहो पिए चाहियो त सभु मुंहिंजा माते थी वञो, जहिड़ो हुन ताक़त जो लाॾिले थियण खां इमरान ख़ान करे बि इनकार कोन। पोइ अहिड़े वक़्त में जॾहिं हुननि खे ज़रूरत पई त न हाणे इमरान ख़ान असांजी फ़िलहाल पिच ते न आहे त शायदि इहो मौक़ो जॾहिं ॿी धुरियूं बि चवनि हा त तव्हां असांखे हर 3 साल बुछड़ो करे कंदा आहियो, कढंदा आहियो, हलूं था अवाम वटि, इमरान बि अवाम वटि वञे, फ़ैसिलो अवाम खां कराईंदासीं, महिरबानी करियो तव्हां विच ते न पोइ हुकूमत बिदाल करे हलूं था अवाम वटि। उनजे बजाए हुननि पंहिंजा कुल्हा अचिया वेही रहिया हुकुमरान थी, हाणे चवनि था असांखे ड्रेजारियुनि त हीअं कंदा हूअं कंदा। तव्हां छो डिगा? चवां इन करे डिगा जो तव्हांजो ईमान अवाम जी ताक़त में न रहियो, तव्हांजा हथ साफ़ न रहिया, तव्हां जमहूरियत ताईं अवाम तां ईमान विञाए चुका हुआ, न त न ॾिजो आहे। ज़ियाल के दौर में न पई बेनज़ीर डिजे, ख़ौफ़नाक भयानक हिकिड़ो वहशाणो दौर हो, न डिगी न, बीठी न, जहिड़ो खाधई न, MRD में सभु बीठा न उन वक़्तु, छो न पे ॾिना? ज़ियाल त वधीक बरबरियत वारो, हीअ त कुझु कोन्हे हुनजे आॾो, विच बाज़ार में माण्हुनि खे कोड़ा हणंदा, इहा घटि बरबतियूं। पोइ इन सॼी सूरत में माण्हू बीठा न, नज़ीर अब्बासी जी जान वई, पंहिंजो मां नाला खणा सिंध ऐं पंजाब में अलाए केतिरा नारान सॼो प्रोग्राम हलियो वेंदो आहे बिल्कुलु सर, ॿियनि सूबनि में। मां सिंध पंजाब त ख़ासि तौरु मर्कज़, सिंध त नंबर 1 मर्कज़ हो, पर हुन खां पोइ पंजाब में बि केतिरा कारकुन हुआ पीपुल्स पार्टी जा, भुटे जा, शदाई, जिन खे हिननि फांसियूं ऐं मारियो ऐं गुम कयो। ऐं चवण जो मक़सदु आहे त उन सॼी बरबरियत में जीअं त सियासी कुवत अवाम सां बीह रही त उहा न पई थिए। हाणे जीअं त तव्हां अवाम सां रिश्ता तोड़िया आहिनि, तंहिंजे करे तव्हांखे जी कंहिं कन में चयो त इमरान ख़ान तव्हां सां उहो ई करण वारो आहे, पोइ तव्हांखे टंगे छींदो, हुकूमत वेंदी हली, जेलनि में पिया हूंदो, हुन चयो वारो कयो हिननि सां ठही वञो, अलाए असां सां कहिड़ो भयानक सुनो, छो जो तव्हां अवाम सां रिश्ता कटे, तंहिंजे करे तव्हां कुला अचिया। पोइ हाणे इहो चवणु त फलाणो लाॾिलो आहे, लाॾिला सभु थियणु चाहिनि था, जंहिंखे वारो नथो मिले उहो ॿियो लाॾिले ते दाए थो। ईअं न आहे त ॿिया के वॾा उसूल पसंदि थी जमहूरियत जा चैंपियन थिया बीठा आहिनि, जेके चवनि था त साह वेंदो त ॾेई छॾंदासीं, पर असां तव्हां लाॾिला न थींदासीं, अहिड़ी का बि ॻाल्हि। वारो खपे पंहिंजे पसंदि जे टर्म्स ते खपे। हाणे उहा ड्रोड़ आहे सीट हिकिड़ी आहे, म्यूज़िकल चेयर में को हिकिड़ो ई वेहंदो, जेको रहंदो हुनखे धिको लाहिणु चाहींदो या उन जे लाइ इहे लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदो। अदरवाइज़ इस्टेब्लिशमेंट लादिला पालिया, इस्टेब्लिशमेंट लादिलनि खे सगारो कयो ऐं बदकिस्मती सां असांजी सियासी धुरनि अवाम सां रिश्ता छिनी, लादिले थियण जो ऑप्शन वरितो, नतीजे में हाणे हुननि जा हिक ॿिए जे ॻंढनि में हथ आहिनि, कलनि में हथ। ऐं इन ई ऑप्शन वरी रियासत खे कमज़ोर कयो। नसीर साहब वरी महिरबानी अवां जी, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर यूब शेख साहब वेलकम जो पिया अवां खे बि, अवां ॿुधो पिया? जी अता जी, थैंक यू सो मच सर। अवां जो छा ख़्यालु आहे सऊदी अरब जे गादीअ वारे शहर रियाज़ में जेको हिन वक़्तु इस्लामी मुल्कनि जो सरबराही इजलास हले पियो, अनवार उल काकर साहब हिन में शरीक आहिनि, मज़म्मतूं कयूं पियूं वञनि, मुतालबा कया पिया वञनि, पर हिन जो को असरु थींदो इसराइल ते? हिकु पासे इजलास हले पियो, ॿिए पासे गज़ा में इस्पतालुनि जे मथां फ़ज़ाई हमला बि थियनि पिया ऐं वरी टैंक्स बि पहुची चुकियूं आहिनि ज़मीनी हमलनि जे लाइ। मुंहिंजे लाइ हिकिड़ी नई ॻाल्हि OIC में हिकिड़ी अॼु आहे जेका मां ॿुधाइण थो चाहियां जी, उहा इहा त पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहिब हिन में आहे। हिकिड़ी नई ॻाल्हि इहा आहे, जेकॾहिं असर जी ॻाल्हि था कयो, OIC जा जे इजलास असर वारा थियनि हा त इसराइल ऐं फ़लस्तीन वारा जहिड़ा कॾूक ख़तमु थी वञनि। हीअ जेके पाण में वेठा आहिनि, हर कंहिं जा पंहिंजा पंहिंजा मफ़ाद आहिनि ऐं कंहिं महिल ही इंसान थी सोचनि ई नथा, ही रुगो मुस्लमान थी सोचनि था, ही सऊदी थी सोचनि था, पाकिस्तानी थी सोचनि था, उर्दुन ऐं यमन थी सोचनि था। हिननि खे बिना देर इंसान थी सोचणु खपे त हुते जेके हज़ारे इंसान क़तल था थियनि, इस्पतालुनि ते हमला था थियनि ऐं रोज़ रोज़ इसराइल मां इहा ॻाल्हि पई अचे त असां तव्हांजो जुड़ बचो नास कंदासीं,
इजलास तव्हां बिल्कुलु कयो, इजलास करण बि खपनि, पर तव्हां हिन इजलास में हिकिड़ी इम्पोर्टेंट ॻाल्हि ॾिठी, उन्हनि मुल्कनि जी मुज़मत ई न कई वई जेके इसराइल खे हथियार था ॾियनि। उन्हनि मुल्कनि जी मुज़मत ई न कई वई जेके इसराइल सां गॾु बीठा आहिनि। उन्हनि सरबराहनि जी निंदा ई न कई वई जिन इसराइल में वञी ऐं जनाब वज़ीर आज़म इसराइल जी हिमायत बि कई ऐं उनजी पुठी बि खटी। इहा वॾी कमी ऐं ख़ाल नज़र आयो इजलास दौरान वाकई में सर। मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु हीअ आहे त इहे इजलास बि थियणु खपनि, ॿिया इजलास बि थियणु खपनि, टियां इजलास बि थियणु खपनि, पर जीअं त ही मुस्लमानीअ जो चकर आहे न, इन मुस्लमानीअ जे चकर में ही मुतहद थी न सघंदा। को अहिड़ो सिस्टम हुजे हा, मिसाल सोवियत यूनियन हुजे हा त ॿ ब्लॉक आहे, हिकिड़ो ब्लॉक डायरेक्ट वञी सिधो हुते बीह रहंदो आहे, हाणे उहो आहे ई कोन। रूस अलॻि विड़ियो पियो आहे, चीन अलॻि विड़ियल पियो आहे, रूस यूक्रेन ते चढ़ियो पियो आहे। इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि इहे असां समूरनि माण्हुनि जे नुक़सान जूं ॻाल्हियूं आहिनि। ऐं तव्हांजे ॾिसंदे ही फ़लस्तीनी अॼु 10,400 थिया आहिनि, सुभाणे 11,500 थींदा। अॼु इस्पतालूं 2 हिसा बंदि थी चुकियूं, 36 मां 18 इस्पतालूं तबाह थी चुकियूं, सुभाणे 36 मां बाक़ी 30 तबाह हूंदियूं, 6 बचंदियूं। आहिस्ते आहिस्ते ही सभु अहिड़ो कमु कंदा जो हिननि समूरनि फ़लस्तीनियुनि खे चवंदा त मिस्र वारो जेको ऋण पियो आहे न, इहो तव्हांखे ठाहे था ॾियूं, हीउ इलाइक़ो ख़ाली। ॿी का बि ॻाल्हि न बचंदी। ऐं इहो सभु मुंहिंजी ऐं तुंहिंजी कमज़ोरी जे करे थो थिए। असां जेकॾहिं दुनिया जा मुल्क अमेरिका सां, इसराइल सां, ख़ुदि सऊदी अरब सां, ख़ुदि फ़लस्तीन सां उन नमूने डील कयूं हा न त अॼु इहे सूरत हाल त बि न अचे। फ़लस्तीन जे सां बि असां डील न कयो, इसराइल सां बि असां डील न कयो, उन्हनि सां जे डील कयूं आहे प्रॉपर बि समूरा मुल्क उन्हनि खे मथां चढ़िया वेठा हुजनि हा। जेकॾहिं आहे हिकिड़ी अखि हुजे हा उन्हनि जे मथां, निगरानी कनि उन्हनि जे ख़राबियुनि ते, त एॾी ख़राबी वधण ई न ॾियनि। ठीकु डॉक्टर ईब शेख साहब, वॾी महिरबानी पंहिंजी। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, हिकु लाइटर नोट ते अव्हां खां जेकॾहिं पुछूं त मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में अव्हां मुल्क जी नुमाइंदगी कई एज़ एन एम्बेसडर, मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में रहिया, अव्हां बि लाॾले हुअण जो को मज़ो वरितो सर उन दौरान? ऐं सेकेंडली इहो त असांजे मुल्क में इहो छो आहे त बजाए कारकर्दगी ॾेखारे लाॾलो बणिजण जे इहो आसान रस्तो इख़्तियार कयो वेंदो आहे, ताक़तवर धुरनि जा दरवाज़ा खड़काया वञनि था ऐं उन दरवाज़नि ज़रिए इक़्तिदार हासिल कजे थो? अदा इहा ख़्वाहिश त रही आहे, पर कॾहिं मौक़ो न मिलियो आहे। दरअसल लाडलो थियण जी ख़्वाहिश सभिनीनि जी हुते आहे, ख़ासि तौर ते सियासी मामलनि में, पर सरकारी मामलनि में जे लाडला तव्हां थी बि वञो त 2 महीना न 4 न त 4 न त 6, उन खां बाद तव्हां पंहिंजे वज़न ते किरी पवंदा आहियो। त इन करे मां सरकारी कामरनि खे जेके ख़ासि तौर ते वॾनि उहिदनि ते हूंदा आहिनि, जेके ॿाहिरि हूंदा आहिनि मुल्क खां, उहे हिकिड़े मिंट में एक्सपोज़ थी वेंदा आहिनि। त इन करे उहा ख़्वाहिश हुजे बि त उन ख़्वाहिश खे माण्हू दॿाए रखंदो आहे, कोशिशि कंदो आहे त महिनत करे, ऐं महिनत न कंदो त पंहिंजी बेइज़ती कराए मोटी ईंदो। त इन करे बि थोरो शायदि मौक़ो न मिलियो। बाक़ी अदरवाइज़ लाडलो थियण जी सियासत में बि कोशिशि आहे, ब्यूरोक्रेसी में बि ठीकु ठाक कोशिशि हूंदी आहे, ख़ासि तौर ते जिथे सुठा माल पाणी वारो जिथे हुजे, उहिदा हुजनि, त उन में इहा ख़्वाहिश हूंदी आहे। ऐं शॉर्टकट न सिर्फ़ु लॻाईंदा आहिनि इहे सियासतदान, पर असांजा ब्यूरोक्रेसी वारा बि चकर लॻाईंदा आहिनि, शॉर्टकट कंदा आहिनि इहे, ते उहे बि लाडलो थियण जी कोशिशि कंदा आहिनि। तव्हांजी ॻाल्हि में पूरे वज़न आहे, पर जेके परॾेही मामला आहिनि उन में माण्हू एक्सपोज़ जल्दी थो थी वञे, ऐं घरू मामले में थोरो एक्सपोज़ देरि सां थो थिए। अवाम जी नज़र में त ख़ैर सभई एक्सपोज़ आहिनि, पर हुते जे ॿियनि जी नज़र में बि थी पवंदो आहे। त इन करे इहे सिलसिलो आहे। बाक़ी लाडनि जो मामिलो त पाकिस्तान में डिघी में बि बंदि थी, माण्हू हलिया वेंदा, मालिकनि वटि उते मिली मुलाक़ात करे पंहिंजो सभु हिसाब किताब करे मोटी ईंदा। त ही त हाणे मिनतूं था कनि कि असांखे लाडलो ठाहियो। इन वक़्तु जेके सूरत हाल आहे, मिनतूं कि असांखे लाडलो थोरो घणो करे वठो, ऐं उन में जेकी शइ उन्हनि खे जेकी ज़रूरत आहे, जेके उन्हनि खे वणे थी उहे तव्हां खां कराए वठनि। खणी उहो CCC में जेको लिखाए वठनि तव्हां खां सेंसस जे बारे में, या किथे ॿिए हंधि ॿिए मामले में कसर लाइ चई छॾनि,
रिफ्यूजी अफ़गान जेके इलीगल इमिग्रेंट्स आहिनि उन जे मामले में तव्हां खां कुझु कराए वठनि, त हीअ सभु शयूं जेके आहिनि इहे बिल्कुलु जाइज़ आहिनि। अॼुकल्ह जेको सियासत अॼुकल्ह दरअसल थी वई आहे इंडस्ट्री। सियासत उहो जीअं नसीर मेमण साहब ॿुधाई आहे न ॻाल्हि, त उहा सियासत अवाम वारी त अवाम खां त सां त जुड़ियल आहिनि न माण्हू। अवाम खे ते शिनाख्ती कार्डूं जमा करे था वठनि, को क़ुर ते क़स्मूं खणाए था छॾनि, कुझु पैसा टुकड़ बि ॾेई था छॾनि, को बिरयानी जी प्लेटूं बि मिली वेंदियूं आहिनि, वीचारा वोट छो ॾेई ईंदा आहिनि, को दड़का को ॿियूं शयूं मिलाए। बाक़ी उन खां अलावा तमाम सां को राब्तो शाब्तो आहे न। त इन जो असल हाणे सभिनीनि जो वतीरो इहो थी पियो आहे, हाणे लाडले थियण जी कोशिश में कॉम्पिटिशन लॻी पई आहे। जी ठीक है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, थैंक यू सो मच सर, गुड एनालिसिस। नसीर मेमण साहब खे मां कोट कयो त डॉक्टर यूब शेख साहब खां इन हवाले सां पुछंदासीं। डॉक्टर साहब, नसीर मेमण साहब ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त बेनज़ीर भुट्टो जहिड़ी अवाम जी लाडली थियण जे लाइ जान ॾियणी पवंदी, ऐं शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जहिड़ो अवाम जो लाडलो बणजण जे लाइ वरी फाही क़बूल करणी पवंदी। ऐं अॼुकल्ह जे हुकुमराननि में शायदि एतिरी हिमत न आहे। अवां जो छा ख़्यालु आहे, लाडलो थियण जे लाइ इहो सभु कुझु छो पियो थिए, ऐं छा अवाम वटि इहो इख़्तियार कॾहिं वेंदो त उहो पंहिंजो लाडलो पाण चूंडे? अॼोके प्रोग्राम में कंहिं असांजे पैनलिस्ट चयो आहे त सियासत हाणे इंडस्ट्री आहे। नसीर मेमण साहब जो ख़्यालु हुयो त हाणे इक़्तिदार जे लाइ सियासतदान जेके आहिनि उहे इहो आसान रस्तो इख़्तियार कनि था, ऐं जेल जूं सख़्तियूं जेके आहिनि उहे बर्दाश्त करणु सभु कंहिं जे वस जी ॻाल्हि आहे। ॻाल्हि ॿुधो, जेसि ताईं साफ़ त प्रो पीपल हुई जी, अवाम जे लाइ कमु कंदी, अवाम जे लाइ उथंदी मरंदी जीअंदी, ऐं उनजा साफ़ ई जेके आहिनि उहे बाज़मीर साफ़ ई लिखबा, कॾहिं बि साफ़त इंडस्ट्री जो नालो न वरितो। साफ़त इंडस्ट्री थी वई, उहा साफ़त जेका आहे इस्टेब्लिशमेंट जी लाडली थी वई। साॻे नमूने सियासत जेसि ताईं अवाम जो कमु कंदी तेसि ताईं जूणे जो कंदो। मोहम्मद खान जूणे जो पैदा थींदो, ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो थींदो, नज़ीर अब्बासी पैदा थींदो, फाज़िल राऊ पैदा थींदो, बेनज़ीर भुट्टो पैदा थींदी। हाणे सियासत जेका आहे न उहा इंडस्ट्री थी वई, इन करे इन जो अवाम सां कमु कोन्हे। ऐं सियासत जी इंडस्ट्री में हाणे अवाम मज़दूर आहे, कॾहिं कॾहिं अवाम जी छांटी थींदी, कॾहिं मज़दूरनि खे बेदख़ल कंदा, कॾहिं उनखे कहिड़ी इंडस्ट्री में रखंदा, कॾहिं कहिड़ी इंडस्ट्री में रखंदा, कॾहिं रोज़गार ते हूंदा कॾहिं न हूंदा, कॾहिं उन्हनि खे पैसा मिलंदा कॾहिं न मिलंदा। इहे अवाम मज़दूरनि जी हालत में सियासत जी इंडस्ट्री जे हेठां पीड़ रहिबा अॼोकी नई सूरत आगी आहे। ठीकु आहे। डॉक्टर यूब शेख साहब, हिन वक़्तु इहो अवां जो पंहिंजो बयानात अथसि, सहाफ़त जेका आहे उहा बि इंडस्ट्री बणी चुकी आहे, ऐं सियासत जेका आहे उहा बि इंडस्ट्री बणी चुकी आहे। तरदीद पी मां करण वारो आहे ई कोन मुंहिंजो। तव्हां बि आज ज़ामरा साहब वांगुरु हिकिड़ो बयानु ॾियो न, त मतिलबु पार्टी पॉलिसी आहे अवां जी ज़ाती पॉलिसी आहे सर। पर मां त ॾेई छॾियो न, इहा मुंहिंजी अयूबी पॉलिसी आहे। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, एंड में अवां जो कुझु जुमिलो सर कुझु चवणु चाहींदव? जी, एंड में मुंहिंजो नंढो भाउ वेठो आहे, उनखे शेर ॾाढा पसंदि आहिनि, त हाणे टाइम घटि रहिजी वियो आहे, त हीअ सभु जेके ॻाल्हियूं थियूं इन जो हिकिड़ो जेको आहे निचोड़ उहो आहे त दीवाने से क्या कहिए, फरजाने से क्या कहिए, इतना सा है अफसाना, अफसाने को क्या कहिए, तलवार के साये में, तलवार के पहरे में, इस आने को क्या कहिए, उस जाने को क्या कहिए। ज़बरदस्त साईं अयूब साहब, बड़ी मेहरबानी सर। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर यूब शेख साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। नसीर मेमण साहब, थैंक यू सो मच। सलमान आबिद साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। नज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो आहे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा, अलाह निगहबान।